Did you know that 90% of startups don't survive even the first 5 years? The difference between those who fail and those who succeed often comes down to a few timeless lessons. So I asked three successful entrepreneurs only one question. What would be your advice to new entrepreneurs? Their answers were different, but together they can save years of your trial and error. So, without any further ado, let's dive into their answers. On that note, Vikram, as you are the first entrepreneur in your family, like all of them earlier worked in the government jobs, as you said. So, what would be your, you can say, what would you like to tell the upcoming entrepreneurs, like whosoever is thinking to become an entrepreneur or to start with a startup, right, or build something from scratch? What would be your guidance to them? See, I would say just two things. One is focus and clarity of thoughts. If you focus on your what you want to build, and if you have a clear thought key how you want to build, just go for it. Because in initial years, people will reject you. People will say ki why. People will ask question. But until and unless you've tried, until and unless you've done, there's nothing. So for anyone who is starting a new business, who is planning for the entrepreneurship journey, I would say, first of all, be focused, be clear with your thoughts. आजकल क्या हो गया एक entrepreneurship has become a fad कि यार हम लोग 2 महीने ये करेंगे पसंद नहीं आया, 2 महीने ये करेंगे पसंद नहीं आया, तीसरे महीने ये करेंगे पसंद नहीं आया, उसको जॉब में चले जाएंगे. ऐसे नहीं होता. You have to focus, you have to be focused, and you have to give your time. इसके साथ में आपको एक छोटा सा एक आई वॉज रीडिंग अ बुक. उस बुक में लिखा था फॉर एनीथिंग सक्सीड इन द वर्ल्ड यू हैव टू गिव मिनिमम 1000 आवर. अगर आप किसी भी चीज में 1000 घंटे दोगे तो ही आप सक्सेसफुल होगे, नहीं तो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल. सो राइट डे व्हेन यू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी यू हैव टू फोकस कि बॉस मेरे को यहाँ इसमें 1000 घंटे तो देने ही देने. उसके बाद सोचो कि आप सक्सेस हो या नहीं हो. That's a different thing. But you have to give your 1000 hours. 1000 hours. Amazing. Amazing. Thank you so much, Vikram. Thanks a lot for putting light on this. Even I came to know about this today. What advice would you like to give to the upcoming entrepreneurs who are aspiring to do something in the AI field? Will advise them that don't consider that everything needs AI, man. You don't have to upsell everything with the flavor of AI. No, it is not required. The first thing that you need to know is first educate yourself, understand what exactly AI is, and see what are the available solutions. Don't try to create something which is already there. AI has come into picture because of evolution. To try to use AI instead of creating AI, that is one part. Secondly, first understand how data ops works, how data works, and then second part is before moving into AI, learn ETL. I am repeatedly saying to all my clients, individual, you should know either build your own. ETL is extract, transform, and load because AI, the engine to run AI is data. Don't rely on any LLM's data where you don't know on which data the model was trained. You're asking Chat GPT like a preamble. You don't know whether this is correct or you need to get checked by professionals. You are asking them law question. You are asking them medical questions. But if you just follow them because you don't know what is their background that is coming from, you're gonna ask. It is something that you are gonna ask an engineer that I'm having fever. He say go and take Dolo 650 4 tablets once at a time. So first understand the data, then the data source. If you know how data actually works, and then there are websites like Hugging Face. There are many free AI models available. Experiment it before investing your money into it. Follow AI leaders, and then before now in these days
More than more than AI application development, you need to understand and create system which can control AI. You don't have that amount of money in terms of resources and computing power which big companies have. Try to, for example, now is the age everybody is creating AI agents. So I'll ask entrepreneurs, understand what AI agents are. Don't create an AI agent which calculates simple interest, which we know it is called PTR by 100. Understand the use case, see the complexity of the problem, find a fit model, experiment it yourself, and then once you see, okay, fine. For example, if the idea of AI is to augment the existing process, not create it, you know, if you're saying that if it is increasing the performance of a company or yourself from 1x to 10x to 100x, use your innovation there, innovate there in that spectrum, not into creating something which is already there. People, entrepreneurs do this mistake, you know. People sometimes is gonna I'm gonna create chat GPT, we get inquiries. It's bullshit concept. Why you want to create chat GPT? Find out a problem, and when you're trying entrepreneurship, when you have an idea, do the research on an idea, validate that idea. That is a gap that is happening. They'll start building it directly. If you, for example, if you have an idea, see, is this idea feasible? That is also a part of journey. Create an MVP, create an MVP, learn certain skill sets, and then get involved into the market. You know, there are, if you know, type forms, Google Forms, do these free tools, survey monkeys, ask with people, do interviews, and then understand it is viable. Then you will, for example, you might, some people, what a startup does is they invest so much of money and later they found out there is a similar solution already available, and they don't have that much amount of exactly. Then they don't have that much amount of money to compete with them. There is a possibility the competitor is IBM, the competitor is OpenAI. So find a problem statement, validate that problem statement, see what unique you are doing. All incubator, when you apply for incubation, they're going to ask you the same question. What is something that you are doing? And you cannot do a direct message to all entrepreneurs. Don't think doing a job parallelly you will become an entrepreneur. This is a lie, lie, lie. You have to give 100% commitment that, okay, my brother will look into it and then I will do my job parallelly. You are not an entrepreneur. You're making a fool of out of entrepreneurship. You have to put your ass on fire and cook yourself, then something will come out. So if, for example, people go out and ask venture capitalists, I need investment, they're going to ask, how much have you invested? Nothing. I have an idea. Now they are not fools, people sitting around there. They will put money on the running horse. First question is, how much have you invested and how much time are you putting into it? This is it. क्या होना चाहिए एक फाउंडर के लिए मैसेज जो सोच रहा है कि वो कोई एक बिजनेस फाउंड करेगा, बी इट माइक्रो स्केल, स्मॉल स्केल, मिड स्केल, कुछ भी, लेकिन उसको क्या माइंडसेट लेके इस इन 2025 इस फील्ड में आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए? ओके, तो सी, मैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर आंसर नहीं सोचा इसका। नहीं, हाँ, पुट वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है। देखो, अच्छा एंटरप्रेन्योर आपको बनना है तो कुछ चीजें जरूरी है। कुछ तो स्किल सेट वाइज, कुछ कैरेक्टर सेट वाइज, और थर्ड है आपका बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप कर रहे हैं। मैं अगर बिजनेस से रिलेटेड फर्स्ट बात करूं तो पहला जो भी कुछ कर रहे हो पहले उसको आप थोड़ा एनालाइज कर लो, रिसर्च कर लो, लोगों से मिल लो उस पे। सपोज आप कुछ भी करना चाह रहे हो, पॉडकास्ट ही करना चाह रहे हो, तो पॉडकास्ट से रिलेटेड लोगों से आप मिलो, आप अपनी स्ट्रेंथ देखो कि क्या क्या चीजें हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे। तो जितना आप रिसर्च कर लोगे उतना आपका इनिशियल स्ट्रगल कम होगा, हाँ ना। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तो थोड़े से अलग रहे, सीधा कूद गए डिजिटल मार्केटिंग में, कुछ आता नहीं था, राइट। बट फिर इसलिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग गया। बट कोई अगर प्रॉपर रिसर्च करके अगर उसे करता है तो उसको
अच्छा मूवमेंट या वो मिल जाएगा, अच्छे लोगों से जुड़ते जाओ. So that is one thing, and also see like what is your strength in that area. And second most thing is don't focus on all the things. Suppose आप कुछ भी, सपोज ये पॉडकास्ट ही हुआ या हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, या आप कोई हल्दीराम का शॉप ले लो, ठीक है. नहीं है कि आपको सारी मिठाइयां बेचनी है, ठीक है. देयर इज वन थिंग विच चेंज द एंटायर बिजनेस. तो आप चाहे वहां हल्दीराम का पूरा ना करके केवल लस्सी बेचो, बट अच्छा बेचो. आप केवल उससे करोगे तो चीजें पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. वन सिंगल थिंग चेंज द एंटायर बिजनेस. थर्ड इज कीप द बैलेंस, जो मैंने इसमें बताया है, स्टार्टिंग में बताया. हाँ, आप बैलेंस बना के रखो अपने काम का, अपनी हेल्थ का, अपने रिलेशंस का. कई सारे फाउंडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उन सब रिलेशन बर्बाद हो रखे हैं, या उनका हेल्थ कुछ और, तो आप सब कुछ मेंटेन करके चलो, क्योंकि उससे आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी. ट्रू. तो वो आप एक बिल्कुल कीप इट इन माइंड. एंड एंड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड द मार्केट, और आगे क्या करना है उसको भी आप देखो. ये सब तो है, इससे आपने स्टार्ट कर लिया, बट ग्रोथ तब होगी जब आगे आप यूजर को जितना समझोगे, उसको समझ के आप आगे का स्टेप पहले रखोगे और चीजें सही से रखोगे, वो आप करते जाओगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एंजॉय द जर्नी. अभी आप खुश नहीं रहोगे, अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे, तो थोड़े टाइम में आपको उसको ब्रेक लगाने का लगेगा कि यार लगेगा. पहले जॉब नहीं चल रही थी, अब बिजनेस नहीं चल रहा, जिंदगी में कुछ हो ही नहीं. तो आप उसको एंजॉय करो, डरो मत किसी से. डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. बी ट्रूथफुल, आपको एनर्जी मिलती रहेगी. बस दैट्स इट. अच्छे लोगों से मिलते रहो. हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. नेटवर्क. डोंट टेक शॉर्टकट्स और किसी भी लोगों के साथ काम शुरू कर दिया, किसी के साथ भी कुछ कर लिया. यू शुड बी विद द राइट पीपल, तो चीजें फिर मूव होएगी. लाइक वो क्लियर माइंड होना, उसी के लिए शायद थोड़ा स्पिरिचुअल होना और थोड़ा फिजिकली फिट रहना जरूरी है. व्हेन योर ब्रेन कैन थिंक प्रॉपरली कि क्या, हाँ, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. लाइक हैविंग दैट फाइन लाइन ड्रॉन कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है. राइट राइट राइट, वो बहुत जरूरी है. और ये एक जो रिलेशनशिप का बताया, आपके आसपास के लोग सही रहने चाहिए, वही आपको एनर्जी देंगे. वैल्यू पीपल अराउंड यू, चाहे आपका एम्प्लॉय हो, आपका क्लाइंट्स हो, आपकी फैमिली हो, एनीवन, पेरेंट्स, सबको आप वैल्यू करो, क्योंकि अभी आपके पास कुछ है नहीं. आप किसी की वैल्यू करोगे तो फिर कुछ होगा. राइट. So, whose advice resonated with you the most? Drop their name in the comments and let me know why. If you are an entrepreneur or dreaming of becoming one, then do subscribe, because every story here is packed with lessons you don't have to learn the hard way. See you all in the next episode. Till then, take care. Bye bye.